So today we will start with the new topic, that is Mendelian disorders. In Mendelian disorders, we need to study the pedigree analysis. Now, what is pedigree analysis? Pedigree analysis means that we are analyzing the inheritance of the traits. कि अगर एक फैमिली में कोई डिजीज कैरी ऑन फर्दर होती जा रही है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो वो डिजीज का पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस का। क्या वो जनरेशन स्किप कर रहा है या वो हर जनरेशन में दिख ही रहा है, या फिर क्या वो सिर्फ फीमेल्स में ही हो, जो मतलब जितनी फैमिली में फीमेल्स हैं सिर्फ उन्हीं को हो रही है डिजीजेस, या जितने मेल्स हैं उनको हो रही है, या इट इज अ मिक्सचर ऑफ दैट। तो ये सब कुछ जब हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी यूजिंग अ पेडिग्री चार्ट। तो उस एनालिसिस को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सही राइट, द एनालिसिस of traits in a several of generations of a family in the pedigree analysis. So I'm writing PA, pedigree analysis, the inheritance of a particular trait represented in family tree over generations. So we will make the family tree, and in that family tree we will say over the generations if there is inheritance of any particular trait, it is there or not. So for the construction of the family tree, we need to keep in mind few symbols. So few symbols, they are very easy. If a box is there, that means we are denoting it as male. If a circle is there, that means it is a female. And if there is a straight horizontal line between a male and a female, that means they are mating, or husband wife we can say. And ये तो है normal. These are normal conditions. Like they are not affected, neither they are carrier. Now, if we have to show that the person is suffering from some disease, so what we'll do is that we will shade this. So this is affected male. Box means male and shading means affected. Similarly, if circle is shaded, we will say affected female. Then, if there are two horizontal lines between male and females, now that does not mean that they are meeting twice. No, that means meeting between the relatives, like they are siblings, और होता है ना दूर के रिश्तेदार हैं, और उसके बाद they are getting married. So this means meeting between relatives. देन इफ वी हैव टू शो द फैमिली ट्री, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि पेरेंटल जनरेशन कौन है, फिर उनके बच्चे कौन है। सो ऐसे शो करेंगे। पेरेंटल जनरेशन ऊपर हो गया। नाउ बिलो दैट, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, और पहला बच्चा कौन था, इट अ मेल और अ फीमेल। फर्स्ट जनरेशन है ये, एंड दीज आर पेरेंट्स। पहला बच्चा कौन है वो हमें समझ में आ जाता है बाय लुकिंग एट द सीक्वेंस, कि जो बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट पे होता है दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड, और जो एक्सट्रीम राइट पे हो जाएगा दैट इज द नेक्स्ट चाइल्ड, मतलब उसके बाद जो आया होता है। तो यहाँ पर दो ही बच्चे हैं, सो दिस इज द सेकंड चाइल्ड। अब अगर एक और होता है यहाँ पे, सपोज हियर, देन वी कुड हैव सेड दिस अ थर्ड चाइल्ड, लाइक दिस। और अगर बच्चा कोई अफेक्टेड है तो इसको हम कलर कर सकते हैं, शेड कर दिया हमने, दिस इज थर्ड चाइल्ड इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड, जस्ट टू शो कि अफेक्टेड कैसे दिखाना है बच्चे को, लाइक दिस।
एंड इफ अनदर सिंबल इज यूज्ड कि अगर जो बच्चा है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, बच्चे हैं दे आर अनअफेक्टेड एंड ऑल्सो उनका हमने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, बस हमने बोल दिया कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे दे आर अनअफेक्टेड, तो हम उसको शो करते हैं बटे रोम्बस से। रोम्बस मींस ऑफस्प्रिंग सारे ही आ गए इसमें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सो वी कैन से जेंडर अनस्पेसिफाइड, जेंडर अनस्पेसिफाइड एंड दीज आर अनअफेक्टेड, क्योंकि मैंने इसे शेड नहीं किया, दैट मीन्स अनअफेक्टेड। सो दीज आर फ्यू सिंबल्स जो हमें दिमाग में रखने हैं व्हाइल डूइंग द पेडिग्री चार्ट। ओके, सो नाउ बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? Mendelian disorders are mainly those disorders that are determined by changes या फिर mutation in a single gene। एक जीन में अगर कहीं प्रॉब्लम आई है, एंड यस दे आर आल्सो फॉलोइंग द लॉज ऑफ मेंडल्स। जो तीन लॉज है हमारे, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों लॉज ये फॉलो करते हैं, और इसमें चेंज कहाँ पर आ रहा है, जो डिसऑर्डर हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम चेंजेस या फिर म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। सो राइट, दीज आर मेनली determined by alteration या फिर mutation। Alteration means changes again, and mutation also means sudden irreversible change in the DNA. I can write here sudden irreversible change in DNA वो हम बोलते हैं mutation. So in कहाँ पर हुई है ये? In a single gene. Now there are few examples of Mendelian disorders that we need to study their inheritance pattern and उसमें हो क्या रहा है। सो ये जनरली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, क्योंकि जीन में हुआ है। तो अगर जीन में कोई भी इशू होगा तो देयर आर चांसेस। नाउ चांसेस डिपेंड्स कि कौन से जीन में प्रॉब्लम हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट चांस है कि नेक्स्ट जनरेशन में सेम पैटर्न जाएगा या नहीं जाएगा, सेम ट्रेट जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर वो जनरेशन को स्किप करेगा। सो ऑल दीज डिपेंड्स ऑन कि जो डिसऑर्डर्स हैं क्या वो ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है, और फिर ऑटोसोमल में भी क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, अगेन सेक्स लिंक्ड में भी क्या वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। सो आई एम राइटिंग कितने टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेन हेडिंग्स, they can be autosomal or they can be sex linked. Now, under the autosomal category, again, they can be dominant or they can be recessive. Again, similarly in sex linked, they can either be dominant or they can be recessive. Now, I would like to give you one homework. In your NCRT, few diseases are mentioned like hemophilia, cystic fibrosis, then sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, major and minor. These diseases are already mentioned. So you have to make the list of them कि how many of them, कौन कौन से उसमें से autosomal dominant है, कौन से autosomal recessive है, कौन से sex linked dominant है, कौन से sex linked recessive है. And two pedigree charts are also given. One is for myotonic dystrophy. So myotonic dystrophy is autosomal dominant disease. So one example I'm writing, it is myotonic dystrophy.
Another is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is autosomal recessive. So I'm writing here. It is sickle cell anemia. For other diseases, you have to make the list and you have to put under the relevant heading. Yeah, either they belong to this one or this one or this third one or this fourth one. Okay, so now we will study one example of pedigree analysis and then you have to identify the another one. First, I am telling you. So if this is mating between a male and a female, and if this is colored, that means this is affected female. These are parents. So next generation, we have to show it like this. So the first child is, according to the pedigree, first child is female, unaffected. Another child is male, but affected. Draw this pedigree side by side. Then there is also one male, another offspring, son, and this son has been getting married, has got married to another female, and now they have their own family. So this is the family chart of them. This one is female, daughter, another daughter, and next is the son. All are unaffected. Then this is the female, it means daughter of this first generation parent. These are the parents. In parents, the second daughter. First daughter was here. This is the second daughter. And she has got married to the male, and this is their family tree here. There was one son, elder son, and then daughter in between, and then another son. Daughter is affected. Here, this female was affected. Now, this is the pedigree chart of myotonic dystrophy. So myotonic dystrophy, as I mentioned above, myotonic dystrophy is autosomal dominant trait. Myotonic dystrophy. So you should know if some disease is coming, जैसे यहाँ पे हमने mention किया कि myotonic dystrophy है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो myotonic dystrophy है, that is autosomal dominant disease. एग्जाम में कोई भी डिजीज आ जाएगी, but you should know whether it belongs to autosomal category or sex-linked category, and then whether it is dominant or whether it is recessive. So here I am telling you it is autosomal dominant. Now, before starting the pedigree, what you have to do is you should know the symbols of all the affected individuals, all the normal individuals, and all the carrier individuals. Carrier are those, carrier means they are having that trait. मतलब ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन में वो बीमारी के सिम्टम्स नहीं है. मीन्स बॉडी में ट्रेट है, जीन हैज बीन देयर फ्रॉम देयर पेरेंट जनरेशन, लेकिन उनकी बॉडी में वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इस जीन को आगे अगली जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं. उनको हम बोलते हैं बेटे कैरियर. सो आई एम टेलिंग यू, for autosomal disease, here we can use the symbol of capital A for dominant trait, कि इनका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल ए हो, या हो सकता है इनका जीनोटाइप स्मॉल ए. तो अब पहले एक बार ये देख लेते हैं, अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए कम्स फॉर डोमिनेंट ट्रेट, दैट वी ऑलरेडी नो कि मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग जैसे हम करते थे, कैपिटल टी मींस एक्सप्रेशन होगा ही होगा, एंड द ट्री विल बी या फिर द प्लांट विल बी टॉल. सिमिलरली यहाँ पे
कैपिटल ए है अगर और डोमिनेंट फीचर है, दैट मीन्स कैपिटल ए द पर्सन इज अफेक्टेड, इसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। Okay, so in this one, capital A means dominant. That means the person is affected. Now, be it a male or be it a female, affected ही होगी। Now, as we know, मेंडल ने ये भी कहा था कि अगर एक भी कैपिटल allele present है, then also it will express its features. So जब उसके physical features express हो रहे हैं, तो small a तो अपने आप को express कर नहीं पा रहा है। कैपिटल ए जब एक्सप्रेस करेगा तो स्मॉल ए नहीं करेगा। दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगेन कैपिटल ए बीइंग डोमिनेंट, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मींस अगेन द पर्सन इज अफेक्टेड, अफेक्टेड होगा ही होगा। इसमें दिस वाज होमोजाइगस, और होमोजाइगस कैसा था? डोमिनेंट था। उसमें भी पर्सन अफेक्टेड है। कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी पर्सन इज अफेक्टेड। नाउ अनदर कंडीशन कैन बी स्मॉल ए, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, या तो हेट्रोजाइगस होता है, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव होता है। सो इफ आई राइट होमोजाइगस रिसेसिव, सो दैट मीन्स अगर स्मॉल ए है पर्सन के पास एलील्स का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स दिस वन इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल इंडिविजुअल सिर्फ तब होंगे जब वो स्मॉल ए है उसके पास, फॉर दिस डिजीज, फॉर दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, फर्स्ट डिजीज दैट वी आर कवरिंग। और अफेक्टेड कब होगा? जब वो, चाहे उसके पास कैपिटल ए है, चाहे उसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो वो पर्सन विल बी अफेक्टेड। नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में बेटे कैरियर का कोई केस नहीं बनता, क्योंकि कैरियर तब होता है कि जीन है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तो एक्सप्रेस भी कर रहा है। सो ऑलवेज जब भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज आती है, हमेशा मेक श्योर कि या तो पर्सन नॉर्मल है या अफेक्टेड है। कैरियर मतलब बीच का कोई पार्ट नहीं है। या तो पर्सन क्या है? नॉर्मल है, या तो पर्सन अफेक्टेड है, बस। नाउ अब जितने भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? नॉर्मल इंडिविजुअल्स। नॉर्मल इंडिविजुअल्स यू कैन सी number one, this parent is normal, male parent, this daughter is normal, this person is normal, again normal, again normal, again normal। तो जितने भी नॉर्मल हैं उसमें यू कैन पुट दिस जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन कि भाई इनका तो हमें श्योर है कि इनका जीनोटाइप स्मॉल ए ही होगा, बिकॉज नॉर्मल इंडिविजुअल का और कोई केस होता ही नहीं है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल का तो वी आर श्योर क्या होगा? स्मॉल ए। इसका भी क्या है जीनोटाइप? स्मॉल ए, अगेन स्मॉल ए, नाउ हियर स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो जैसे ही आप ऐसा कोई पेडिग्री देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल वाले लिख दो, स्मॉल ए। नाउ कमिंग टू, अच्छा ये भी रह गया, दिस इज ऑल्सो स्मॉल ए। नाउ कमिंग टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में, वेट आई शुड चेंज माय पेन। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हमें ऑप्शंस है हमारे पास कि दैट कैन बी आइदर कैपिटल ए और दैट कैन बी कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि अब हमें चूज करना पड़ेगा। और जहां हमें डाउट है कि भाई हो सकता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन हो, इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम दोनों ऑब्लिक करके लिख देंगे। हो सकता है कंडीशन डोमिनेंट है, हो सकता है कंडीशन हेट्रोजाइगस है, मतलब या तो होमोजाइगस है या तो हेट्रोजाइगस है। कैसे? आओ एक बार देखें, लेट्स सी। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पेरेंट, द फीमेल पेरेंट which is affected, female parent, this is affected। तो अब इसमें आप देखो बच्चे कि इसमें या तो हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है, या हमारे पास ये हो सकती है, बिकॉज दोनों के केस में ही इट इज अफेक्टेड। अब हमें अगर या वाला कंपोनेंट हटाना है, दैट वी हैव टू मेक श्योर कि इसका क्या जीनोटाइप है, तो हमें देखनी पड़ेगी इसकी अगली जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन में आप देखो, if we can see small a, here we can see ना small a, again we can see, हाँ ये रहा small a,
तो अगर स्मॉल ए है, दैट मीन्स एक स्मॉल ए तो फादर से आया होगा, दूसरा स्मॉल ए आने के लिए मदर हैज टू बी इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली। तभी तो एक स्मॉल ए फादर से आया, दूसरा स्मॉल ए मदर से आएगा, तभी तो ये बच्ची, ये जो फर्स्ट जनरेशन की बच्ची है, शी इज नॉर्मल। तो दैट मीन्स इसका ये कंपोनेंट हट गया। वी आर श्योर दैट फीमेल पेरेंट हु इज अफेक्टेड हैज द हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। Okay. So now similarly we can see if this parent, female parent is having capital A small a and male parent is having small a, then this affected child, this affected son has to be capital A small a only, because this capital A would be coming from mother and small a would be coming from father. स्मॉल ए कैन ऑल्सो कम फ्रॉम मदर, लेकिन फिर उसको, इस सन को नॉर्मल होना पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो अफेक्टेड है। सो अफेक्टेड कंडीशन में हमें या तो डोमिनेंट कैपिटल ए चाहिए या फिर हमें हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए। सो देयरफॉर वी वुड से द सन, अफेक्टेड सन इन द फर्स्ट जनरेशन इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड डॉटर, तो ये जो सेकंड डॉटर है, इसके पास small a will come from father and out of capital A and small a from the mother, which one will come? It will be capital A, because this female is again affected. Now coming to this one, the daughter of these parents, small a, out of the small a, one small a is going to daughter, and out of this capital A small a, again capital A will go because the person, the female is affected. So this completes our pedigree कि कितना किसका जीनोटाइप होगा, कितना किसका परसेंट चांस है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो दिस इज फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एग्जांपल वी हैव डन ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। Okay, so now we will try to do another pedigree that is for autosomal recessive traits. नाउ ऑटोसोमल है, दैट मीन्स हमें एक्स वाई सिंबल्स तो नहीं यूज करने हैं। एक्स वाई सिंबल हम यूज करते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए, और ऑटोसोमल के लिए हम उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है उससे रिलेटेड सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली जैसे अभी ऊपर हमने कैपिटल ए या स्मॉल ए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, फॉर दिस आई टेक द एग्जांपल ऑफ, ऊपर हमने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का लिया था, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें बेसिकली हो क्या जाता है कि जो हमारे आरबीसीज हैं, जिस पर्सन को ये डिजीज है उसके आरबीसी में व्हाट विल हैपन, द आरबीसी जो डिस्क लाइक होते हैं, लाइक दिस, डिस्क लाइक होते हैं, वो हो जाएंगे सिकल लाइक, लाइक दिस। तो जब जब सिकल लाइक हो जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन वो कम हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया उस पर्सन का, और O2 बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। सो बेसिकली दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम एनीमिया, बट वो एनीमिया जो है वो किसी विटामिन की कमी की वजह से नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑफ डिसऑर्डर इन द शेप ऑफ द सेल। तो जो शेप है वो डिस्क लाइक होनी चाहिए ऑफ आरबीसी, डिस्क लाइक आरबीसी, लेकिन वो चेंज किस में हो गया, वो चेंज हो गया इनटू सिकल लाइक आरबीसी, सिकल लाइक आरबीसी। इस डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। अब इन डिटेल वी विल स्टडी कि इसमें हो क्या जाता है कि लाइक कौन सा बेस पेयर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ना एक सिंगल जीन में चेंज आता है, देयरफॉर ये
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इन डिटेल वी विल स्टडी इट लेटर। अभी देख लेते हैं इसका पेडिग्री एनालिसिस। तो फॉर दिस वी कैन यूज द सिंबल HB। HB मीन्स हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गया। नाउ HbA वी कैन यूज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल, कि जिसका डिस्क लाइक आरबीसी है, दैट इज नॉर्मल इंडिविजुअल। Now HbS, Hb again S. This we use for the person suffering from the disease. मतलब S means sickle cell. Okay, so this is affected individual. And heterozygous condition इसमें क्या बनेगी? HbA and HbS. Now if the person is heterozygous, that means we were studying recessive disease. So रिसेसिव कंडीशन में भी नो कि अगर रिसेसिव वाले को एक्सप्रेशन देना है तो इट हैज टू बी इन होमोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव डिजीज में इट विल बी अ कैरियर। कैरियर मींस इस पर्सन को खुद तो कोई सिम्टम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसको सिकल सेल एनीमिया है, नो। इसका जो इसको जो है सिर्फ जीन इसके पास है, लेकिन वो express नहीं हुआ because a dominant HbA gene is already there. So this person is a carrier, लेकिन ये आगे next generation में इस HbS को carry forward कर सकता है। This is what I mean by the word carrier. So now if I make the pedigree chart of considering this trait in a family, then male and female, they are meeting, and next generation we have one son, male, another male, and this male is affected. Then we have daughter, then another daughter, this another daughter is affected, and then we have a son again. Now this daughter is getting married to a normal male according to the pedigree chart। मतलब वो normal भी हो सकता है, वो affected भी हो सकता है, वो normal भी हो सकता है, वो carrier भी हो सकता है, because it is not shaded, that means any can be the case। And then इनकी जो next generation आ रही है उसमें one male is affected, then we have a daughter, then another daughter। Now if we want to know कि इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? In this case we will start from, see it is autosomal recessive, recessive disease है, so you should know कि जो नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल केसेस हैं, उनका तो श्योर है एच बी ए होगा, और जो अफेक्टेड वाले हैं उनका श्योर है एच बी एस होगा। तो सबसे पहले कौन सा फिल करना इज इजी? नॉर्मल फिल करना। नॉर्मल में आपको शेडेड नहीं दिखेगा, कैरियर में भी आपको शेडेड नहीं दिखेगा, लेकिन अफेक्टेड में आपको शेडेड दिखेगा। तो कौन सा फिल करना इज इजी फर्स्ट? पहले कौन सा फिल करना चाहिए हमें? सो इट इज अंडरस्टूड कि जो अफेक्टेड वाला है, बिकॉज दैट इज ऑलवेज शेडेड, ये श्योर है, ये वाला हम फटाफट पहले फिल कर देंगे, एंड देन वी विल अप्लाई आवर ब्रेन टू दोज जो या तो नॉर्मल हो सकते हैं या तो कैरियर हो सकते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट ऑल द फीचर्स इन, all the genotype in affected ones. So this one is HbS, HbS, again HbS, HbS, this one also HbS and HbS। अब सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स में और बाकी सब में क्या क्या जीनोटाइप आएगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक एंड देन आई विल टेल यू द आंसर्स। Now let us discuss the answers of these unknown genotypes in this pedigree chart. So we already know जो shaded part है, that means they are affected. So affected वालों के लिए हमने लिख दिया HbS, HbS सब में,
HBS. नाउ जहां हमें श्योर नहीं होता कि क्या वो कैरियर है या वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो क्योंकि उसका पेडिग्री चार्ट कंप्लीट नहीं है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन शोन नहीं है हमें, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम वहां पे लिख देते हैं कि आइदर इट कैन बी HBA और इट कैन बी HBS। लेकिन जहां हम कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं उसका हेट्रोजाइगस कंडीशन ही होगी या उसकी होमोजाइगस कंडीशन ही होगी, बाय लुकिंग एट इट्स नेक्स्ट जनरेशन या इट्स प्रीवियस जनरेशन, कहीं से भी अगर हमें हिंट्स मिल जाते हैं तो वी हैव टू राइट श्योर वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे कमिंग टू द पेडिग्री चार्ट, पेरेंट जनरेशन। नाउ इन दिस पेरेंट जनरेशन वी हैव सीन कि जो इनकी फर्स्ट जनरेशन आ रही है उस फर्स्ट जनरेशन में दिस सन, सेकेंड सन इज अफेक्टेड। तो ये अफेक्टेड कब होगा? जब इसके पास दो कॉपीज होंगी ऑफ HBS। तो दो कॉपीज कहाँ से आएंगी? when one will be coming from mother, another will be coming from father. So that means parents has to be in a heterozygous condition. They cannot be HBA. They has to be HBS. So this shows the genotype of the parent generation. Now coming to the first generation and the first son. For this first son, because the pedigree is incomplete, iska mating and then offsprings are not given in the pedigree, so it can be a normal male or it can be a carrier male. So we will be right or या फिर स्लैश डाल के we are putting HBS or it can be HBA. Then coming to this male, the third male in the pedigree that is getting married to the first daughter. इसमें check करते हैं तो again it is heterozygous condition because we can see through the next generation. ये जो second generation आई है अपने पास, second generation में one male is affected. So one male is affected, that means it has two copies of HBS. So one has been coming from the mother, this one HBS, another is coming from the father HBS. Similarly, the last male, the last son in the first generation, because pedigree is incomplete, so there are chances it can be a normal or it can be a carrier male. Similarly, the last two females in the second generation, again, incomplete pedigree is there, so anything is possible, either HBA or HBS, and here also HBA or HBS. I hope this much is clear to all. So now there's one question for all of you. If both parents have sickle cell trait, then there is dash of child having sickle cell anemia. Read the question very carefully before answering. And your options are A 25%, B 50%, C 75%, and D no risk. Just make one pedigree and try to do this question. So answer to this question is 25% because the person having या फिर the child having sickle cell anemia means जो जिसके अंदर वो trait HBS condition में present होगा and HBS condition आएगी हमारे 25% means 1/4 of the generation में if we draw the chart for this condition. And sickle cell trait means that the person is having HBA genotype and not HBS. Trait hona. So now we are moving to next kind. It is X-linked diseases.
in X-linked disease या फिर sex-linked disease, both are same. Again, there are two types. One can be autosomal, another can be recessive. They're very easy. Another is, sorry. One is dominant. I'm saying dominant like in writing autosomal. One can be dominant, another can be recessive. ठीक है. अब इसको पहचानना कैसे? सबसे पहले अगर पहचानने की बात आती है तो we will see if father is affected, then all daughters will be affected, because dominant वाले में, ये I am talking about the dominant trait. To annotate, this is for dominant condition. If father is affected, all daughters will be affected. And recessive वाले को अगर पहचानना है तो इसके लिए we have a feature that it can skip generations and affected father do not pass this disease or the disorder to their sons. बेटे के पास तो फादर कभी भी आगे पास ऑन नहीं कर सकते और इसमें जनरेशन स्किप हो सकती है. देन एक पेडिग्री में अगर आप देखोगे कि मोर मेल्स आर मोर ऑफन अफेक्टेड देन फीमेल्स, दैट मीन्स इट इज एक्स लिंक्ड recessive disease. So another feature to identify is males are more often affected than females. Thus, these are the features that we should keep in mind. Then I'm writing the symbols. कौन-कौन से symbols हमें use करने होते हैं in sex linked disease. Like अभी हमने देखा था autosomal disease में हमने AA use किया था या फिर we have used HBA, HBS. I'm deleting this point. ये क्योंकि annotate हुआ है तो I'm deleting this. It can skip generations. So now symbols to be used in sex-linked dominant, X-linked dominant traits. So X will use क्योंकि Y क्रोमोसोम पे ज्यादा डिजीजेस मतलब ज्यादा जीन्स नहीं होते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम Y वाला. तो बस छोटा सा क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर ज्यादा जीन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. जब ज्यादा जीन्स होंगे नहीं तो उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. तो एक्स लिंक्ड मीन्स वो एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक्ड है. तो अगर हमें एक्स ए कंडीशन है दैट मीन्स द पर्सन इज अफेक्टेड, या अगर अफेक्टेड हमने शो करना है तो हम सिंबल यूज करेंगे एक्स ए फॉर अफेक्टेड, एक्स ए. देन हियर अगेन एक्स ए और दूसरे वाला इज नॉर्मल एक्स. अगेन द पर्सन विल बी अफेक्टेड, नॉट कैरियर, बिकॉज आई टोल्ड यू कि डोमिनेंट केस में कोई कैरियर का केस नहीं बनता है, या तो अफेक्टेड होता है या तो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है. तो ये तो हो गई दोनों फीमेल्स, अफेक्टेड फीमेल. This is also affected female. If I talk about male, तो ये X, A और Y. जैसे Y दिखा that means it is a male, और जैसे X A दिखा मतलब it is affected male. And if I write simple X X, so it is normal female. Normal male के लिए we know it is XY. Normal male. So these symbols you must know. Normal female. Now symbols for X-linked recessive. X-linked recessive.
Now there is one disease known as color blindness. Color blindness. This one is X-linked and this is recessive disease. So for color blindness हम use करेंगे XC. C means color blindness के लिए. So XC जब होगा that means it is affected female. Then if it comes XCX. Now क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव में एक्सप्रेशन के लिए, डिजीज के एक्सप्रेशन के लिए हमें दोनों होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे मेंशन किया दिस वन. लेकिन XCX है, दैट मीन्स द पर्सन, द फीमेल इज कैरिंग दैट ट्रेट बट इट इज नॉट हैविंग showing the symptoms. That means she is a carrier. So carrier female. और अगर XX है तो it is normal female. Normal female. Coming to male. So XY जैसे दिखा वो मेल हो गया. So अगर XY है that is normal male. लेकिन अगर XCY है, because Y के ऊपर C नहीं आ सकता, it can be XC only. So XC means ये कैरियर नहीं है, कैरियर नहीं होगा. यहाँ पे देखो ये कैरियर है XCX वाला. जब एक X है जो किसी के साथ है दैट इज अ कैरियर फीमेल, बट दूसरे वाला इज नॉर्मल X ना, तो वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेगा. लेकिन अगर मेल के पास ऐसी कंडीशन आ गई कि एक भी अगर उसके पास अफेक्टेड जीन है तो दैट मेल विल बी अफेक्टेड. सो दिस इज अफेक्टेड मेल. मेल कैन नेवर बी द कैरियर, मेल विल बी अफेक्टेड. एक भी अगर एक्स उसका डिजीज है, क्योंकि दूसरा तो वाई ही है, तो एक अगर डिजीज एक्स है दैट इज अफेक्टेड मेल. सो दिस इज फॉर कलर ब्लाइंडनेस या फिर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. सो pedigree analysis and then kinds of diseases, dominant recessive, autosomal B or be it sex linked, we have covered them all. I hope this topic is clear to you.